Hi everyone, welcome to StudyIQ Paripurna MCQ session and आज डेली आम MCQ सेशन डिस्कस करी था 7 PM रे तो इन दिस सेशन टुडे सेशन रे आम डिस्कस करबा एनवायरनमेंट रिलेटेड MCQ किसी आम डिस्कस करबा राइट। तो आज आम जो MCQ प्रैक्टिस करबा दैट वुड बी डन फॉर व्हाट फॉर द OPSC प्रीलिम्स। सो OPSC प्रीलिम्स को आम आखि आगे रखिकी राइट। सो वी आर गोइंग टू discuss some prelims questions जोटा कि हमर environment related questions को हम आज डिस्कस करबा and join fast everyone। join कर दिया समझते join fast। गुड इवनिंग शत्रु बाकी मैंने join कर दिया ठीक है आज यूजुअल। यूजुअली प्राय तो मु सब बड़े टाइम रे आसी जाई थे। सुनीता also joining me। good evening सुनीता and I hope के other will join fast so that we will carry forward the session को हमें आगो को नहीं कीजिबा। आज जो MCQ सेशन रही दैट इज जो एनवायरनमेंट सेशन रही द सेशन इज कंप्लीटली डिवोटेड और दैट इज द बेस्ड ऑन एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। द एक्ट एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। गुड इवनिंग राजेंद्र। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करिबा। गुड इवनिंग एवरीवन। द फर्स्ट क्वेश्चंस अपन मन को पाखरे रही द फर्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखिबा एटा आंसर तो आसी जाइए तापर हम देखिबा द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सॉरी द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 से कहिछि द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was enacted in after which of the following disaster Bhopal gas right that is Chernobyl nuclear accident, Minamata disaster and Love Canal disaster। so this is Bhopal gas tragedy obviously हम जानचे को था भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो एंड दिस एक्ट ये जो एक्ट रही आपन को एनफोर्स किए करिवो हु विल एनफोर्स दिस एक्ट एनजीटी याको किए एनफोर्स करबो दैट वुड बी एनफोर्स्ड बाय एनजीटी। तो आपको किए करिवो एनजीटी एज पर एनजीटी एक्ट 2010 अनुसार दैट वुड बी एनफोर्स्ड राइट बिकॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर ऐसे। तो मधुचंदा आल्सो जॉइनिंग मी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को जाम क्वेश्चंस नंबर 2। Which of the following is not covered under Wildlife Protection Act 1972? चलो फिर next question number 2। now we are question number 2 mu pacharchi first one is we have done it। question number 2 which is not covered under the Wildlife Protection Act? Hunting regulation, establishment of national park sanctuaries, regulation of GM crops and protection of endangered species। easily हेई परिवो easily हेई परिवो जस्ट टिके दिमाग लगेले easily हेई परिवो। दिस इज इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आज बहुत आराम से करि परिवो तमने। राजेंद्र सी सुनीता शत्रुजीत ए समस्ते बे सी कहउचंती मधुचंदा आल्सो सी। तो राइट आंसर इज सी। तो ऑब्वियसली हम देखिए बिकॉज तुम जो वाइल्ड लाइफ एंड सैंक्चुरी ये सब अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसार होता है। सेमती आम केवल हंटिंग रेगुलेशन होता है दैट मीन्स देखो ये क्वेश्चन को आम जो सॉल्व करूचे ना दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आम यार प्रोविजन भी जानूचे। लेट्स से मेंस रे जदी ये क्वेश्चन पचारुचे दैट मीन्स यू कैन राइट द प्रोविजन राइट। जैसे प्रोविजन को आम लिखि परिबा तो yes the answer would be C। now the National Green Tribunal न्याशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल
को ईयर रे आस्थिला इन व्हिच ईयर आंसर तो हमें देखी देले ना बहुत बढ़िया 2010 इट्स ए व्हाट 2010 बहुत इजी क्वेश्चन रही बाकी मैंने जॉइन कर दियो यस 2010 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इजी इजी क्वेश्चन नहीं आज बहुत ही जल्दी तुम मन सर जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉरेस्ट राइट एक्ट एफसीआरए सॉरी एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट की बेस्तला ये भी हमें जानी चाहिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट इज अ लैंड राइट व्हिच इज दैट मीन्स जो पीवीटीज कम्युनिटीज हमर रही छंती द ट्राइबल्स ब्रदर एंड सिस्टर्स द लैंड इज एलोकेटेड दैट मीन्स एथरे हमें कोन कथो जो लैंड एलोकेशन और लैंड राइट is given to special to PVTs right देखिए हमें इट्स अ व्हाट लैंड राइट फॉर द ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ताले ध्यान से रखबा कि ट्राइबल्स बा फॉरेस्ट ड्वेलर कहा को कहा जाए एनीवन व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन्स इज ए फॉरेस्ट ड्वेलर बा ट्राइबल बोली केमती हम जानिबा हाँ केमती जानिबा केमती माने जन को जो लैंड राइट दिया जिवो जो हमारे एफआरए अंडर रे केमिति दिया जिवो ता क्राइटेरिया कोन जानिबा केमिति ई लोकोटा ही फॉरेस्ट ड्वेलर और नॉट केमिति जानिबो ग्राम सभा रही वेरिफिकेशन विल बी डन बाय हुम ग्राम सभा तो एटा कोन ग्राम सभा करिवो अच्छा से लोक को लोकोटा को दिया जिवो जो लोकोटा तीनटा जनरेशन सेठी रहूची एटलीस्ट 3 जनरेशन 1 जनरेशन इक्वल टू केते 25 इयर्स केते 25 इयर्स एटा मन रखिबो तो दैट वुड बी वेरीफाइड बाय हुम ग्राम सभा रही नाउ ओके so it will be done by that is the gram sabha then after gram sabha and 3 generation that means 75 years जहाँ को हमें कहिबा तो ये क्राइटेरिया मन रखियो नेक्स्ट क्वेश्चंस एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन वेयर लैंड राइट हमें देखिले एफआरए एक्ट अंडर नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन रही तो जदि मु आंसर देखिबी इंडिविजुअल्स एस 1981 3 जनरेशन दीप्ति कहूची शत्रु कहूची 5C मधुचंदा 5C देखिए इजी क्वेश्चन दिया आराम से कर पे लेट कहीं होची जे तो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड एयर जोड़ा कि हमें कह एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 कौन 1981 अच्छा एइथरे आउ किछि जिंस मु ऐड कर दउछि हाउ टू रिमेंबर मु कहितली लास्ट टाइम हाउ टू रिमेंबर कहितली कि नहीं लास्ट टाइम आउ थरे मु कहूछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसिला इठी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिस इज व्हाट जो वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एठी आसिला एटा हला एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट राइट ये आसीगला तमरो सो दीज आर द एक्ट्स आर देयर तो एमान को हमें मन रखी परिबा तो मु तार लास्ट टाइम गोटे तमन को कहितली कि केमती सीरियली मन रखी परिबो ना हाउ टू रिमेंबर फ्रॉम ए सीरियल्स गोटे सीरियल्स रे केमती तमे मन रखियो मु लास्ट टाइम मध्ये कहितली आ उथरे मध्ये कहूची हाउ टू रिमेंबर देखो मु किछिटा लेखुची तमने जदी मन रखी परिबो 1960 फास्ट लिखबो कोन 1960 कोन प्रिवेंट एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जोटा कि हम कहबा प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट देन आसीबो 1971 रामसर कन्वेंशन दैट इज व्हाट रामसर कन्वेंशन देन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कोन आसीबो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्लस 1972 रे आउ कोन आसीबा दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन व्हाट स्टॉकहोम कन्वेंशन
then ଆସିବ 1973 Project Tiger, then ଆସିବ 1974 Water Pollution Prevention Act, then ଆସିବ 1975 Project Crocodile ନା କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଦେବ, then ଆସିବ 1980 Forest जोटा हमें कहवा what regulation जोटा कि हमें कहवा Forest Regulation Act, then 1981 that is Air Prevention Pollution Act, then 1985 Montreal आसीजिबो तमरो Vienna Convention Montreal Protocols ए जो Vienna Convention, then 1986 Environmental Protection Act कौन आसीबो Environmental Protection Act, then 1988 Forest Policy Act, then 1992 Earth Summit and Project Elephant, then आसबो तमरो 1996 पेसा एक्ट एथरे कोन आस्तला पेसा एक्ट, then 2002 Biodiversity Act of India, then आसबो 2004 Project Rhino, then आसबो 2008 national आमर कोन कोडी आस्तला कोन ग्रीन आमर एटा कोन आस्तला तमरो national 2008 रे कोन आस्तला national green mission बोथे, then आसबो तमरो 2011 coastal regulation zone, then 2016 solid waste management act, बस एमिति तुमको मन रखे को पड़ियो हला। चलो फिर मन रहिबो किछि एमिति ना ट्राई कर मन रहि जबो, गोटे खाता रे लिख ताकू लेखि कि बारंबार रिवीजन कर मन रहि जबो, गोटे जगह रे मन रहिबो पक्का मन रहिबो हां हबो ट्राई करि परिबो बिल्कुल मन रहिबो ट्राई इट ना कोन कोचे समझते। चलो नेक्स्ट द वेटलैंड द व्हाट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑलरेडी मु कहि दिछि 1974 हाँ देख इथरे किए आसबो से कोची ऑप्शन 1 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन बोर्ड, द स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, आउ कोन आसबो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। देखो समस्त आंसर दियो, शत्रु कहूची बी, राजेंद्र बी, सुनीता दीप्ति ऑल आर गोइंग फॉर द बी, CPCB. Yes, the answer would be Central Pollution Control Board, CPCB, 1974. It would be what? CPCB, right answer. CP and CB is the correct answer. Then the Biodiversity Act जोटा आउटी के पूर्व कोथली 2002 कोन पे आस्तला आज बहुत सारा क्वेश्चन रखी छी, कने इजी क्वेश्चन रखी छी, बहुत सारा क्वेश्चन रखी छी, एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस मतलब डबल क्वेश्चन मु साधारण तुम 20 टा क्वेश्चन नहीं किए से आज मोर देन 40 क्वेश्चंस रही छी, इजी क्वेश्चन रखी छी एंड बेसी कॉम्प्लिकेशन नहीं, सो दैट बहुत सारा क्वेश्चन रखी छी आज। ओके नेक्स्ट द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर व्हाट? द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स ओनली, द सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, exclusive right to the foreign companies on the biological resources, the control of industrial emission. देखो से कोई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात टू प्रोटेक्ट योर बायोडाइवर्सिटी, एटी कौन लिखाई छी एक्सक्लूसिव राइट टू द फॉरेन कंपनीज, देन माने आमरो बायोटिक रिसोर्स से मानकर एक्सक्लूसिव फॉरेन राइट रहबो तो इंडिया वाला कौन करिवे? हां ये तो कंप्लीटली वेग स्टेटमेंट ना, ये तो हबार नहीं। देन से कुछ कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड ओनली ना, ओनली फ्लोरा फौना दीटा हबो, ओनली भी हबोनी। देन है कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन, ये तो एठी बायोडाइवर्सिटी एठी इंडस्ट्रियल ये भी होनी, ताली कौन होची तमरो सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, एटा एक्सक्लूसिवली केमती फॉरेन कंपनीज को हम देई दबा, सेटा भी तो ही परिबनी, राइट? एंड दैट इज व्हाई सो प्रॉपर एंड द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। Next, climate change and adaptations, India. कोठी आस्तला? Which program is related to climate change adaptation in India?
तो आंसर कौन देखिबा द प्रोग्राम व्हिच रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज इंडिया जदि आम कहबा दैट मीन्स ए कहूँ समस्ते जदि आम देखा ए दौच तो इंडियन मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ना भारत स्वच्छ अच्छा राइट आंसर यस आंसर इज ए तो ये देख ये सब को ना आम मेन्स लिखि पार सब भाव मु सब पढ़ला बेले कही कि you have to use everything that you remember use in the mains you have to use in mains रे हमको यूज करियार अछि अच्छा एटा हम तो देखले नेक्स्ट द कॉम्पेंसेटरी afforestation फंड जाको में कांपा कोचो 2016 रे आसिला कोन पई कांपा कांपा कोन पे आसिला ट्राई करो बहुत इजी देखो आज पूरा इजी क्वेश्चन सब रही इजीली करि परिबो एवरीवन ट्राई करो 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 बी शत्रु राजेंद्र बी बाकी माने मधु बी and what about others 9B Rasmi also joining me Deepthi everyone yes 9B तो आम देखा दैट मीन्स afforestation कौन यूटिलाइजेशन साधारणतः कांपा तुम जान कांपार दीटा थाए गोटे स्टेट फंड गोटे थाए सेंट्रल फंड साधारणतः अंडर दीटा थाए कंपोनेंट गोटे स्टेट आ गोटे सेंटर्स एंड ओडिशा इज द हाईएस्ट रिसिपेंट ऑफ द कांपा फंड इन इंडिया तो राइट ये मन रखियो एंड कांपा फंड रे जो पैसा तुम कलेक्ट होता है यहाँ कांपा फंड अच्छी जोटा कंपेनसेटरी से जाए जो कौन ये समस्त जानते यार मेकानिजम कौन सी जगह गोटे जो कंपनी कराए ना नुआ कंपनी एस्टाब्लीश कराए जो डिफरेस्टेशन हम तार गोटे भैल्यू बाहर फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट द फेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट गोटे भैल्यू कैलकुलेट कर ऑन द बेसिस ऑफ दैट भैल्यू द कंपनी विल कॉम्पेनसेट कंपनीटा कौन कर कॉम्पेनसेट कर मुझे केमती यहाँ कैलकुलेट कराए लेट्स से कौन सी गोटे आम कह जेएसडब्ल्यू एंड तुम मैंने शुणुव न्यूज रे कि जेएसडब्ल्यू एंड पोस्को जो तुम रही पोस्को एंड जेएसडब्ल्यू दी जन मिसिकी केउझर गोटे स्टील प्लांट करेंगे लेट्स से ए एरिया से मैंने स्टील प्लांट करेंगे ये टोटाल गछ अच्छे लेट्स से आमको 1 मिलियन ट्रीज अच्छे ये 1 मिलियन ट्रीज ए 1 मिलियन ट्रीज वैल्यू बाहर लेट्स से आम कह 100 मिलियन एति टंका ताली ये कंपनी 100 मिलियन देदेव कांपा फंड को से पैसा नहीं कि आम आउ गोटे जगह गछ लगेगा ताकू कंपेनसेट करवा नेक्स्ट environmental impact assessment notification 2006 is based under which act this is very important Sasmita also joining me Rudra also joining me next the environmental impact assessment notification 2006 is based under which act Question number 10 रो जदि आंसर देखा राजेंद्र शत्रु मधु दीप्ति सस्मिता सुनीता everybody is going for B so it's a what environmental protection act 1986 wildlife protection act नुह कि biological diversity नुह so right answer is B your right answer is what B the correct answer is B Sipan Jena also joining me okay right so that means I would say environmental impact assessment is coming under 2006 जोटा में देख ले and then now you have to match just a minute the wildlife protection amendment act 2022 added which new schedule wildlife protection act 2002 sorry 2002 रे हम देखबा कौन को न्यू शेड्यूल की से ऐड करी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट अगेन
11 number try करो 11 number देखो this is what perfect revision I would say one time of you will have opportunity for the revision ये revision पे हमको opportunity मिल जाउची right wildlife protection amendment जोटा हम कहूचे 7-11C कहूचे 11C चलची अब देखिबा बाकी माने कोन दउचो सुमित्रा दीप्ति madhu sasmita rajendra satru everybody is going for C okay बाकी माने देखिबा टीटा जदि कहबो कि जो माराइन मामल्स ऑलरेडी थिला हमर एटा जो वार्मिंग टा को हटी गेला राइट वार्मिंग हमो दरकार नै ना इनवेजिव एलियन स्पीशीज को हमें कोन करले ऐड कर देले ना फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 मेनली डील्स विथ व्हाट बहुत सारा क्वेश्चन अछि बहुत सारा क्वेश्चन करियर अछि 12 नंबर जदि आंसर मु देखिबी शत्रु कहूची बी रश्मि बी राजेंद्र बी चल समस्त बी देखो कौन अच्छी अच्छा afforestation तो आसीबो नाही फॉरेस्ट राइट ट्रैट तो आमे देखिथिले एफआरए तो सेठी 2006 रे थिला कार्बन फॉरेस्ट एक्वेस्टेशन आसीबन तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेस्ट yes the right answer is classification and regulation of the forest the noise pollution and regulation and control rules 2000 were issued under what रुद्र ऑल्सो बी बहुत बढ़िया राइट आंसर देखो आमर जो नॉइज रो मीनिंग केते नॉइज जेतरा में 80 डेसिबल्स हुए सेतरा में ताकू नॉइज कहि थाउ जेतरा में जो साउंड टा रहिछि तोर डेसिबल रहिते जेतरा 80 डेसिबल हे जे सेतरा में ताकू नॉइज को अब इंडस्ट्रियल एरिया रे केते थाए 40 डेसिबल्स तमरो अलाउ थाए आ गोटे काम एरिया कोन लेस देन 40 डेसिबल्स थाए साधारणतः इंडस्ट्रियल एरिया रे 60 डेसिबल थाए 60 डेसिबल्स ये जेते थाए तो नॉइज हमें केतल कहू जते 80 डेसिबल्स तो एटा हेइ थाए तमरो नॉइज काम एरिया लेस देन 40 डेसिबल्स एटा मन रखिबा 13 नंबर बी रुद्र रश्मि शत्रु मधुचंदा सस्मिता बाकी मैंने देखो ट्राई करो yes it would be B the right answer would be B next the coastal regulation zone CRZ notification केबे आस्थला ऑलरेडी मु डिस्कस करी छी अंडर व्हाट एटा अंडर व्हाट कहि छी सॉरी एटा अंडर व्हाट केबे आस्थला त मु कहि छी अंडर व्हाट एटा आर मु टिके तुमको हिस्ट्री खाली कहू छी त माने आंसर दियो आर हिस्ट्री कहू छी एक्चुअली यार गोटे रेगुलेशंस फास्ट आसे गोटे एडवाइजरी स्टार्ट विथ इट वाज 1992 शायद देन 2011 एक्ट CRZ एक्ट आसे तमरो राइट सेतले देन अमेंडमेंट हैला ये 2019 अमेंडमेंट हुई बिकॉज ऑफ साइलेस नाइक कमिटी कोन कहथले is a Silas Naik committee that recommended for the amendment of coastal regulation zone act को amendment करि पारे recommend करथले right किंतु ये कोन पई
ना जो कोस्टल एरिया रे 500 मीटर आम कह फ्रॉम द लो टाइड टू हाई टाइड जो रही एरिया को रेगुलेट करने बाइको सेंसिटिव जोन जो रही जोन 1 जोन 2 जोन 3 एंड जोन 4 जो रही रेगुलेट करने राइट से जोन 1 हूँ मोस्ट इको सेंसिटिव देन आसो तमर जोन 3 आसो जोन 2 एंड जोन 4 टा हूँ वाटर पार्ट राइट तो ये कौन आसो अगेन दैट वुड बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसो राइट ये कौन रहा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसो शत्रुजित कही राइट रश्मि एंड मधुचंदा यस इट वुड बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसो क्या अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसो इट वुड बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसो मु तुमको कहली कि कोठी केते रहिबो राइट नेक्स्ट आसबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 15 which body monitors the compliance with the national action plan on climate change NAPCC Sikha also joining me. Thank you for joining everyone. Which body monitors the compliance with National Action Plan on Climate Change? Question number 15. शत्रु कहूँ ए राजेंद्र ए एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए देखिबा हमें ट्राई करो एटा देखो एटा तो मिनिस्ट्री लिखाई छी से तो पचार बॉडी ना से पचार बॉडी तो मिनिस्ट्री केमती कहबो से तो पचार बॉडी ना तो मिनिस्ट्री कहले केमती हेबो राइट इट वुड बी नीति आयोग तो सेटा तो मिनिस्ट्री ही जाउची चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस द पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट ठीक दिमाग लगा एमती नहीं कि जड़े ये कहला माने समस्ते ये कहबो ठीक दिमाग तो लगेबो ना से कहूँ बॉडी तुम मिनिस्ट्री लिखुच मिनिस्ट्री इज नॉट ए बॉडी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आज बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छी लगभग 40-50 क्वेश्चंस रही पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट तो बुझी पारथबो आंसर तो तुम मैंने बुझी पारथबो ना राइट आंसर तो बुझी पारथबो yes it would be what compensation to the victims of industrial accident involving hazardous substances right answer तो मैंने देइछो now question number 17 which act provides legal recognition to the community forest resource easy again this one is easy समस्ते ट्राई करो एमती नहीं कि गोटे दी जन देले बाकी माने देखुच एमती नहीं यू हैव टू आल्सो डीप डाइव सेवेंटीन सी कौची शत्रु रश्मि सी शिखा सी मधु राजेंद्र गोइंग फॉर द सी এটা কোন কইছি তোমरो কমিউনিটি রিসোর্স ভাই কমিউনিটি রিসোর্স কইছি তোম हाँ हाँ ताल ठीक अच्छे
मु भाविली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहीदेला ना ठीक अच्छे फॉरेस्ट राइट एक्ट ठीक अच्छे राइट आंसर ओके बहुत बढ़िया तो राइट आंसर वुड बी व्हाट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आउट के पूर्व देखिए एफआरए या अंडर कौन लैंड राइट मिल एंड प्रिविलेजेस मानक दि जाऊँगी यस द राइट आंसर वुड बी सी नेक्स्ट द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी केवे आसला 2010 कौ सब लॉ को एनफोर्स करे क्वेश्चन नंबर 18 ऑल देखिए आम वाटर आसला एयर आसला एनवायरमेंटल आसला एनजीटी ना हाँ सब ऑल यस ऑल राइट बहुत बढ़िया ग्रेट जॉब ऑल एटी जी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगेदेवी ताले भूल है इफ आई add the wildlife protection act then that would be wrong if I will add what 1960 animal prevention of animal cruelty act then that would be wrong ध्यान से सुनो एठी जदि तुमको animal cruelty act किंबा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ऐड करछंती ताले सेटा भूल हिजबो नाउ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 टारगेट केते एटा तो इजी एंड ओडिशार केते परसेंट अछि की कहबो प्लस आमे केही जणी कुह मते कि ओडिशार फॉरेस्ट परसेंटेज केते अछि ओडिशार फॉरेस्ट परसेंटेज केते अछि एनीवन 19C कोची शत्रु ओडिशार फॉरेस्ट परसेंटेज केते अछि फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ ओडिशा 35 37% फॉरेस्ट प्लस ट्री जदि आम देखा ओडिशार मिसिकी हम 37% खाली फॉरेस्ट जदि नब तो 35% खाली फॉरेस्ट हेले 35% हम फॉरेस्ट प्लस ट्री जदि हो तुम ट्री को नहीं जीवो ताले इट वुड बी 37% राइट तो आंसर कौन हम 33% सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेक्स्ट द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी was established under what biodiversity authority easy question चलो फिर देखो इजी क्वेश्चन देछि आज तो शायद तुमको बहुत इजी क्वेश्चन दिया बट दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट बिकज आज अ प्रिलिम्स जो आम सॉल्व करवा ना ये आमको बहुत हेल्प करिवो दैट विल हेल्प यू सो मच हेल्प मिलिवो चलो 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 फटाफट 20D कौच राजेंद्र बी कौच दीप्ति 20 नंबर कौन कन्फ्यूजन हो गला अच्छा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाइए कहीं हम ए बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बायोडाइवर्सिटी एक्ट अंडर आसो पुणी ए डाउट कौन पाई मु कह कथा बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बायोडाइवर्सिटी एक्ट अंडर आसो ना तो ये कन्फ्यूजन कौन पाई दिस अथॉरिटी विल बी अंडर द दिस एक्ट एमती ना कि फॉरेस्ट एक्ट अंडर करदे ए ग्राम सभा आसो ए तुम कौन एथर एनटीए वगैरह सपोज आम कह टाइगर आसीगला तुम जहाँ आसो तो ये आसो नहीं तो दिस वुड बी व्हाट आंसर वुड बी व्हाट बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स एटा गोटे कौन हो तुम स्टैट्यूटरी ये कौन हो तुम स्टैट्यूटरी बॉडी दिस वुड बी स्टैट्यूटरी बॉडी which act first provided for the establishment of central and state pollution control board
which act first provided for the establishment of central and state pollution control board? Next, which act first provided for the establishment of central and state pollution control board? (21) already I discuss करिछ, already discuss करथिले B will be the option. कौन वाटर जोटा कि प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ कौन वाटर पॉल्यूशन एक्ट एयर तो आसीबनी वाटर आसीबो इट वुड बी बी ऑलरेडी मैं डिस्कस करिथिले करेक्ट ये सब फैक्चुअल्स तुमको पढ़िया को पड़िबो तुमको जदि लागुची कि ना हमको एते डिफिकल्ट हबो भाई पढ़िया को पड़िबो तमे न पढ़ले आउ जने की पढ़िबो आज सब जेते एक्ट एंड पॉलिसीज एट ए टाइम आनीची तापर दिन आनिबी तमर इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स एटा हला एक्ट एंड पॉलिसी देन आउ दिन आनिबा कोन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स ताकू नै कि आसीबा चलो फिर द hazardous waste management and handling rules issued under what? नेक्स्ट टाइम जितरे मु एनवायरनमेंट रो आनिबी प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन नै कि आसीबी 22 सी देख एटा तो एयर तो हबनी वाटर तो हबनी फॉरेस्ट तो हबनी और रहिला कोन आराम से बाहरी जाउची आंसर एटा भाबीबार नहीं which of the international convention led the framing of Biodiversity Act 2002? याठू इजी क्वेश्चन आउ तुमको किछि मिलिबनी बिलीव मी ना कौन कौच सुखई रश्मि दीप्ति 22 23 को आसिलनी मु समस्त आंसर दियो 23 एटा देखिबा क्या आंसर दउची देखिबा एटा आंसर किए दउछु प्रीत गुड इवनिंग प्रीत (23) yes CBD it would be what CBD 23 would be what CBD it would be CBD एठी लिखा है जी कोन बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एठी लिखा है जी तो तमर दुटा मैच करूनी कि देखो एति की सेंस लगे पड़ो एठी लिखा है इंटरनेशनल कन्वेंशन फ्रेमिंग दो तो एठी आसी CBD ये कियोटो प्रोटोकॉल्स कोन पई थिला अच्छा जदि मु तुमको पचारिबी द कियोटो प्रोटोकॉल्स UNFCCC कियोटो प्रोटोकॉल्स ये सब कोन पई थिला UNFCCC कियोटो प्रोटोकॉल्स फॉर GHG ग्रीन हाउस गैसेस ए रहइबो ए कन्वेंशन बायोलॉजिकल कन्वेंशन हमें देखिले स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर द परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट फॉर द परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स POPs हमें कहबा जाको हमें कहूचे POPs राइट कियोटो प्रोटोकॉल्स के भी आसेला हां के भी आसेला कियोटो प्रोटोकॉल्स के कहबो कियोटो प्रोटोकॉल्स के भी आसेला एटा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कोन POPs पई परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट DDT जेमती तमरो फॉर एग्जांपल DDT ताले एटा मते को कियोटो प्रोटोकॉल्स के भी आसेला कौन है गेला कियोटो प्रोटोकॉल्स को ताकू बैकग्राउंड बनैबो केमिति बैकग्राउंड इज 1972 देन 1992 केते इयर्स हैला 20 वर्ष डिफरेंस तुम देखि परिबो देन आसला तमर एठी आसीबो किए तमर अर्थ समिट जोथरे आसीबो UNFCCC देन आसीबो कियोटो प्रोटोकॉल्स केबे 1997 ना 95 केबे 97 yes 97 1997 रे की आसला कियोटो प्रोटोकॉल्स किंतु केम टू फोर्स केबे 2008 ऑन द बेसिस 2005 ना 8 रेस्पेक्ट केम टू फोर्स एंड हबो केबे 2012
किंतु ताको बढ़ाई कि हमें केते करथिले 2018 19 ए करथिले सो दैट वुड बी sorry the national environment policy NEP was launched in which year national environment policy रश्मि जोटा कोच हेटा 2005 नो 2005 बेसिस रे रिडक्शन हबो सेटा बेस ईयर टा जो 2005 रश्मि कोच दैट इज बेस ईयर एडॉप्टेड हेथिला जोटा कि हम कहबा 2005 रे एटा तुमर केम बेस ईयर टा माने अछि हाँ सेटा 1997 रहबो जोटा दीप्ति लिखिछ 1997 राइट द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी लॉन्च्ड के बेहितला बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी चलो 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 देखिए पड़ो 24 डी रश्मि को डी बाकी मैंने देखा ट्राई करो बाकी मैंने ट्राई करो राजेंद्र को डी रेस्ट पारबनी गेस कर पार न इट वुड बी 6 डी राइट आंसर इज व्हाट डी करेक्ट आंसर देइछ किए रश्मि ओके नाउ वाटर सेस एक्ट 1977 एनाक्टेड कौन पे हेथिला वाटर सेस सेस माने बुझी पारबो इट्स ए टाइप ऑफ टैक्स सेस सरचार्ज ए तो इकोनॉमिक्स रे त माने पढिथबो बेसिक एनसीईआरटी वगैरह रे इट्स ए टाइप ऑफ टैक्स was enacted for what 25 सेटा enacted for कहिची for ओ देखिबा सुखई कहूची बी एंड प्रीत कहूची ए लोकल अथॉरिटीज करिवो देखो जेतोले सेस करा जाए सेस साधारणतः सेंट्रल गवर्नमेंट करथे और इट्स ए टाइप ऑफ टैक्स जहाँ पैसा हम सेंट्रल गवर्नमेंट हम से स्टेट को शेयर दिए नहीं और सेस जो आम करूँ से खर्च होता है तो जो मुझे सेस लगौची ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेभलप करने ना फॉर तो हूँ लेविंग चार्जेस एटा देखियो मो आंसर टिके चेक करियो मते कहीं डाउट लगुची यार आंसर एटा फॉर फंडिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हवा कथा तो बी हवा कथा आंसर नहीं ठीक अच्छे करेक्ट करेक्ट इट्स करेक्ट राइट राइट आंसर ए इज करेक्ट आंसर राइट करेक्ट करेक्ट ठीक अच्छे कहना ये लिखाई ना फॉर वाटर कंजप्शन एटा लगाई फॉर कंजप्शन किंतु तमें सेटा को नहीं कि फंडिंग करि पर आम ऑब्जेक्टिव रे एटा को मध्य ही परिबो सेतमे जो सुखई एरिका जो कंफ्यूजन हे गले ना कि एटा फंडिंग सप्लाई वाटर एटा टिके कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देछि जानि सुन कि कहना एटा लोकल अथॉरिटीज बोथ वाटर कंजप्शन पई नेबे हाँ तार ऑब्जेक्टिव पर नहीं कि से पैसाटा कोठी भी खर्च करि पारे सेटा अलग कथा बट सेटा को हम जीवानी द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 were issued to comply with Srikant also joining me देखो ओजोन पे में गोटे थिला कन्वेंशन गोटे थिला प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन होची तमरो जानिचो व्हाट दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कन्वेंशन होची वियना कन्वेंशन ओजोन पे हमर होची वियना होची कन्वेंशन मॉन्ट्रियल होची प्रोटोकॉल्स ताले सेटा पई आमे बस एबे तुम बुझी परथबो ताले आंसर तमरो है ना आंसर बुझी परथो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस पई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होची पेरिस एग्रीमेंट कोन पई 1.5 डिग्री सेल्सियस को कंट्रोल करिया पई स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट पई ताले आंसर कोन हिजबो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स आंसर वुड बी व्हाट यदि कन्वेंशन कहि थांता ताले वियना कन्वेंशन हबो कन्वेंशन यदि हबो वियना ता आंसर यदि मु देखि 26 बी एवरीबॉडी सुखोई प्रीत शत्रुजीत मधु सुनीता रश्मि राजेंद्र एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द बी दैट इज द करेक्ट आंसर यस देखो मु कहि भी दउची क्योटो प्रोटोकॉल्स ग्रीन हाउस गैसेस पई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स ओजोन्स पई एटा होची प्रोटोकॉल्स पेरिस होची तमरो टेम्परेचर वुड बी रेस्ट्रिक्टेड बिलो 1.5 डिग्री रेजिंग
Stockholm होची persistent of pollutant पाई. Then the Wildlife Crime Control Bureau WCCB was established under which act? Easy question. एटा कहबो ये बोर्ड टा स्टैट्यूटरी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड मध्य को कमेंट रे whether this is statutory or constitutional. ये कथा मध्य को whether this is 27 Sikant कुछ B, दीप्ति कुछ B, प्रीत कुछ B, सुनीता, everybody is going for the B. But मध्य एक कथा को whether this is statutory or constitutional body. Rajkumar also joining me. Rajendra B, Susmita B. Is it statutory yet? Right. It's a what? Statutory. Correct. Next. The scheduled tribes and other tribal forest dwellers recognition of FRA Chotasla Forest Right Act is a commonly known as what? Commonly known as what? कौन सी बॉडी जिते एक्ट अंडर होची obviously it would be statutory. Constitutional मतलब क्या? You have to amend the constitution. You have to amend the constitution. It's a commonly known as Forest Right Act. बहुत बढ़िया. अरे आउटे पूर्वरु देखिथिले हमें Forest Right Act बोले आउटे पूर्व हम तो स्टार्टिंग रे देखि जे क्वेश्चन एमते ना कि फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इट अर्लियर and somewhere between what 10 or 15 number questions there we did it. The Stockholm Conference. Conference, sorry, this is not convention, this is conference. देखो स्टॉकहोम रो दीटा होची गोटे हला स्टॉकहोम कन्वेंशन आ गोटे होची स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. अगेन आई रिपीट देयर आर टू कॉन्सेप्ट गोटे हला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आ गोटे हला स्टॉकहोम कन्वेंशन. चलो फिर $15,000 crore सुखई कहूँ 15,000 crore ता मुंडो टेण. Stockholm conference, this is not what? Convention. It's a Stockholm is a global environmental governance. So answer would be what? B. Yes, right answer jone loko deichi kiye se your voice. Yes, correct. Your voice deichi correct answer. Yes, Rasbi, it's a what? Global environmental governance. एठु ही स्टार्ट हेथिला मु सेथि तुमको आउ टिके पूर्वरु कहिथिली कोन के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस प्लस 20 इक्वल टू 1992 ए 72 एथरे 20 मिसै द केतेला 92 हैला अर्थ समिट कोन हैला हमर अर्थ समिट रियो सेथि पई तो एटा इंपोर्टेंट बिकॉज़ ए न थिले ए न थांता सेथि पई. So answer would be B, global environment governance. So that 80 environment पति जो awareness था ना से to ही start हैला. Had this conference not been there, we may not move to Rio. Next, the National Adaptation Fund for the Climate Change, that is NAFCC, was launched in where? In. Not where, in. First time I am having single liner question. Single liner question as because of the act and policies. Then after that we will have also next time I will have some convention and the protocols related questions.
where you will have also opportunity to have the multiples option, but आज टिके straightforward नहीं चाहिए because I need to have cover more question नहले मु साधारणतः statement based question नहीं कि आसे, but आज मु एथिपे single liner आनी छी so that I can cover more question as the prelims is at the doorstep. $52. Everybody is going for D. Yes. So National Adaptation Fund for the Climate Change D. Kahi ki asila? Because of Paris Climate Change Conference. Because of what? Paris Summit. E kahi ki asila pondore? Because Paris Climate Change kotha nahi ja. That is why. PDF you can get it in OS Mentor Telegram group. OS Mentor. Where you can get the PDF? You can get the PDF in OS Mentor, my Telegram groups. OS Mentor. Next. बाकी इनफॉरमेशन भी सेठी मिल जिवो. कोडा में देखिले एटा अच्छा एटा देखिछे कि 31 Prevention Air Prevention and Control Pollution Act 1981 was enacted in pursuance with what? Tapos Maharana also joining me. It's a Stockholm Conference. It's a what? Stockholm Conference again. It's a what? Stockholm Conference. Because environmental governance. Why? Environmental governance. That is why. Rajkumar also joining me. Okay. Next. The Forest Conservation Act 1980 mainly restrict what? बहुत बढ़िया क्वेश्चन. 32. A कौची प्रीत, शत्रुजित बी, रश्मि बी. बाकी देखो, बाकी मैंने ट्राई करो. It would be B, division of the forest and non-forest purposes. It would be B. Answer would be B. Which amendment to the Wildlife Protection Act enacted the National Tiger Conservation NTCA? Which year? Which amendment to the wildlife? को year रही थी ठीक है देखिए. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. आपको कर देले कोन ना गोटे मतलब सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी देयर. A sense of confidence, a sense of revision. That is why I am taking here. Otherwise, I would have the optional like what multiple option based questions. But I have taken this because I need to cover more questions at a time. Otherwise, 20 questions would have been very sufficient to cover the 1 hour of session. Yes. B. Everybody is running after B. B is not the right answer. C. Tapos is going for the 2006 and Rajendra C. Dipti Satrujit Preet. Yes, the C will be the answer. Yes, B is not there. C is the correct answer. That means NTA. This is UPSC बहुत थोड़ा पचार NTA को two time पचार NTCA को UPSC मध्य पचार एंतने की UPSC पचारनी. Then compensatory afforestation fund CAMPA. ये कथा हमें पढ़ी ऑलरेडी CAMPA. Next CAMPA.
चलो फिर चलो देखो देखो ट्राई 50 numbers जाए जीवा पड़े 15 more questions are left there 34 Preet is saying B Satruji this B Tapos is B Srikant going for no okay no idea okay तो भाई कौन पे यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी टू ट्री प्लांटेशन इन द अर्बन एरियाज फॉर द पेमेंट्स फॉरेस्ट से कही द कंपेंसेशन afforestation फंड जोटा रही एनश्योर्स करे कौन पेमेंट्स टू द फार्मर्स ना यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड कलेक्टेड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट एटा आवश्यक कही प्लांटेशन इन अर्बन ही पारे इंसेंटिव्स फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को मु कहीं देवी मु तो यहाँ जो कंपेनसेशन कराई आउ गोटे कौटी गछ लगे कौटी हम आउ गोटे गछ लगे यूटिलाइजेशन आम कर बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट पाई एटा तो आम देखी थे आउ पूर्व देखी थे बा द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान कौन पाई आ मु टेक्निक मध्य कही कि जदि कौन क्या आसू ना स्टेटमेंट बुझी पारुन गो फॉर द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट विथ मॉडरेट टोन एटा देख लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट विथ मॉडरेट टोन सेटा मध्य टेक्निक कही आगु गो फॉर द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट विथ मॉडरेट टोन एक्सट्रीम टोन नुह अडैप्ट दैट वन गो फॉर दैट एंड इट दैट वुड बी आंसर National Electric Mobility Mission plans for electric vehicles adoption, solar energy, energy efficiency in buildings, river pollution ना तो चलो ए तो समझते जानी सारचो बहुत बढ़िया ए इज द आंसर देन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एथरे हमें सबू डिस्कस कर रोचे ईपीआर मध्य रही इंट्रोड्यूस विच प्रिंसिपल्स व्हाट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉल्यूटेड पे प्रिंसिपल्स पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन देखिए ताले कह ईपीआर बहुत टाइम न्यूज रे था ईपीआर बहुत टाइम रे हमको ईपीआर कौन मिले हमको न्यूज रे देखा को मिले राइट ईपीआर माने बुझी पड़ता ईपीआर केमती काम करे किए कहि परिबो ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर राइट बा रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात कौन माने भाव कौन से गोटे कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्शन करूची सेटा तार मध्य दायित्व से प्लास्टिक को केमती रिसाइकल करिवो हैला सेटा तार दायित्व से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट बा ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जोटा 2016 रे आसला सेथरे कहगला कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि तमे प्लास्टिक प्रोड्यूस करूचो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस द पोल्यूशन बुझी पारछ कि नहीं तुमको सर से केमती कलेक्ट करियो बीएमसी को पैसा दे दियो कि भाई बीएमसी पैसा निया मु एतिके मोर एतिके प्लास्टिक रो कलेक्शन कर देबो हाउ डोर टू डोर कलेक्शन कर दियो डेली बीएमसी कलेक्शन करूची कि नहीं बस you have to pay the money to the BMC 37 environment impact assessment notification was first issued where Shikha Kochi 94 Sasmita C Satrujit C Preet is going for 94 Rasmi is going for C RRR कहलानी कौन what yes the right answer is 94 past time so impact of environment assessment 94 the national mission for the green India this is important नेक्स्ट 38 आहरी 10टा 12टा क्वेश्चन रही चलो 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 फटाफट फटाफट 38 do it the national mission for the green India option 1 8 mission under the
ता अंडर आठटा आसे इनिशिएटिव्स अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी काम्पा Paris Agreement obligation. एट मिशन अंडर आसी जाए बाकी गोटे ये टे देखीदेव है ए 2000 नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के आसला किए कह वेन 2008 की सही टाइम देखिए आसला टे देखीदेव मोर मन पड़े इयरटा द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अमेंडेड है 2022 रे कौन पाई कंप्लीटली बैन ऑल सिंगल प्लास्टिक फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड स्ट्रेंथन ईपीआर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देखी promote plastics recycling industry only allow biodegradable plastic without regulation कहीं आमेंट है देख 39 39 yes phase out of single use plastics and strengthen the EPR correct right answer 40 the last 10 question the national action plans for the climate change ये तो हमें देखिले बाबे हाँ देख ये आसी जीवो कोन एठी पचारथिले ना मु एठी पचारथिले ना एटा ग्रीन मिशन टा अच्छा ग्रीन मिशन टा थिला ना ओके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फोर्टी बी यस 40 बी बहुत बढ़िया 40 बी एनजीटी तो जानच कौन इजी क्वेश्चन ताले कौन आसला नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान हमरो 2008 एटा मु सेति में 8 कहितली मन रखियो तक हाँ देख ये सब इंपोर्टेंट मु मोर टेलीग्राम चैनल जोटा अछि ओएस मेंटर से मु शेयर कर देबी ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल अगेन आई रिपीट देन नेशनल ये तो एनजीटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर सारिछे टू 2010 तो समस्त जान कौन कह द लास्ट क्वेश्चन आउ केतरा अछि 8टा क्वेश्चन अछि कोस्टल रेगुलेशन जोन एक कथा मध्ये कहै थिला 2011 वाज इशूड अंडर व्हाट टेलीग्राम चैनल रे जो मैसेज पठाउछो मु रिसीव कर देबी डोंट वरी है ना आई विल रिसीव द रिक्वेस्ट obviously it would be what the environmental protection act 1986 ये तो रिपीट होची क्वेश्चन एबे देखो क्वेश्चन रिपीट होवा स्टार्ट हे गेला एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 led to the criteria of what last 7 questions left energy conservation कौन पे आसला the bureau of energy led to the creation of what the bureau of energy efficiency कौन हो जो तमरो ना तमरो BIS हे जो स्टैंडर्ड हबो कौन हबो एक्ट अंडर कौन आसे ताले कहछ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ओके बहुत बढ़िया ताले कौन हेबो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन हबो बी हबो किए जो तुम रैंकिंग दिए बी तो से तो कहली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी आंसर वुड बी व्हाट बी 42
Then next, perform, achieve and trade PAT scheme is under what? This is very important. This is very important. Again I repeat, UPSC favorite. Perform, achieve and trade scheme is a part of what? Renewable Energy Act 2003, National Action Plan of the Climate Change जोटा आम देखी आगुरी है ना, Energy Conservation Act 2001 and Paris Agreement 2015. देखिए आंसर किए दौच, बहुत बढ़िया आंसर हम। देख मुझे टेक्निक टेक्निक कही, चलो फिर देखा, फटाफट दियो फटाफट दियो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। देख केते जल्दी आंसर आसीगला, डी किए देलानी किए सुनीता, टेक्निक कही बा, टेक्निक पकेले बी बाहर आंसर ना सी, कौन है भूल होगा कौन, यहाँ कौन भूल होगा, रुह मो यहाँ भूल होगा कौन, सी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, तो मत करेक्ट कर दिया, यहाँ सी आंसर करेक्ट मी, मो जो तुम मानकर भूल होगा यहाँ करेक्ट मी, so it's about C, Energy Conservation Act, correct me, okay correct me, it's a Energy Conservation Act, right, correct कर दिया ठीक। तो गोटे गोटे भूल हम एमती आओ। The Convention on the International Trade in Endangered Species CITES is implemented in India through what? এটা ভুল হয়ে গেল, ওকে। The Convention on the International Trade and Endangered Species CITES is implemented in India through Environmental Protection Act, Wildlife Protection Act, से कहूँ एंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ देखा मिल जाइए आंसर ए मिल जाइए समस्त को, बहुत इजी। देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट तो हबार नहीं, राइट फॉरेस्ट एक्ट हबार नहीं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम, तुम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो पार, कौटा हम देख ताले, इधर ए हम ना बी हम ना, चांस नहीं है ना। और एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट तो वाइल्ड लाइफ कोड आसो, ये तो कौन स्पीसीज, तो एनवायरमेंट केमती आसो, तो बी हम आंसर, आंसर कौन बी, क्या से तो एनवायरमेंट ना, से वाइल्ड लाइफ केमती हम। Then the National Bioenergy Mission aimed is what? National Bioenergy Mission, केते बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखो, नेशनल बायोएनर्जी मिशन सेठी लिखा है बायो, बस ये तुम यहीटा देखी आंसर मिल जाव, सब थोड़ी मु भूल हेबी, हैं बायोएनर्जी मिशन ना, देखा नेशनल बायोएनर्जी मिशन ए फर्मुला काम कर ना करनी, बी कौच किए 46 बी कौच आमर राजेंद्र, रश्मि, शत्रु, तेरे तो काम कर ही कर, गोटे अधे भूल होना, सब कौन फर्मुला भूल हम, हाँ थे अधे 99% तो आकुरेसी रोचे आमर, से सीना भूल है थोड़ी भूल हम। बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी, ये कही बायो एनर्जी कौटू आस, बायोमास रु, विंड कौन थोड़ी बायोमास, बायोमास अर्थात कौन तुम फोडर होगा, ग्रासेस होगा, वेस्ट फूड होगा, दैट इज द बायोमास, स्ट्रॉ होगा, स्टबल होगा, दैट इज द बायोमास। बायोमास जिओथर्मल केमती हम, विंड केमती हम, टाइडल केमती हम, हेनी, तो ऑप्शन ना जी किसी भी न जान फॉर्मूला, पेरिस एग्रीमेंट 2015, वर्क्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, ये देखो बहुत इजी, दिस इज आल्सो इजी, फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला मोर काम कर 47, अगेन सी द फॉर्मूला विल वर्क, पुट करके देख, काम न कर कह बिना पढ़ी की आंसर बाहर के इजी देख, हाँ बाइंडिंग केमती हम, बाइंडिंग हम ऑल नेशन इक्वाल हम ना, ऑल नेशन कही इक्वाल तो हेनी, नो हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट ये भी हम, एक्सट्रीम एक्सट्रीम तो हेनी, इट वुड बी व्हाट मु कही कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन हम कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डेवलप कंट्री विल हैव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डेवलपिंग कंट्री विल हैव लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी,
Biodiversity Act. Biodiversity Act 2000 बुझा पड़ी जीव तुम नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी हम आउ कौन तो ही तो जाऊँगी टाइगर तो सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर है ना नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया फॉर व्हाट पॉल्यूशन सीपीबीसी तो तोर वाटर पॉल्यूशन आसीबे तो वाटर एक्ट आसेंडे 1974 रे आसीबो राइट ए 1974 रे आसीबो ए 1992 रे आसीबो तो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट मिलगला आमको है ना आंसर मिल जीवो समस्त को इजी थिला नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2005 ओके बहुत बढ़िया आंसर देछ सुनीता दीप्ति शिखा राजकुमार राजेंद्र बहुत बढ़िया ये 50 क्वेश्चन है एनफ देन आउ मु आउ 40 30 40 क्वेश्चन आम इंटरनेशनल कन्वेंशन आउ प्रोटोकॉल सु नेसले हिजो पूरा तमरो एनवायरमेंट एक्ट एंड पॉलिसी खत्म इजीली वी कैन डू इट बाकी मु कहली वेस्ट मेंटर टेलीग्राम चैनल जॉइन करो फॉर द पीडीएफ्स में मु पीडीएफ शेयर कर देबे आफ्टर द सेशन इट्स अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल पावर टू ऑल इट्स अबाउट अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल पावर टू ऑल कोथरे आसीबो तोर नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2005 देन आसो पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एटा हम डिस्कस करि छै एटा ऑलरेडी डिस्कस करि छै एटा डिस्कस करि छै ना मैं एटा डिस्कस करि छै हम राइट एटा डिस्कस करिथिला हम तो ये थिला आज 50 क्वेश्चंस सो दिस इज ऑल अबाउट द 50 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज तो आज 50 क्वेश्चन थिला सेशन एंड बहुत बढ़िया तुम मनकर कोऑपरेशन राइट गुड कोऑपरेशंस एज यूजुअल थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल पीडीएफ मिल जो डोंट वरी मुकरी वॉइस मेंटर चैनल रे जॉइन कर दियो आई विल गिव यू पीडीएफ देयर So with this, I will end the session and thank you everyone. Good night to all.